So, the relation between group velocity and particle velocity. So, we know that group velocity. So, we know that the group velocity Vg, group velocity is equal to d omega by dk. Okay. So, omega is the angular frequency. Here omega angular frequency is equal to pi f. Okay, and k is the wave vector or wave number. K is wave number. Okay, wave number is equal to pi by lambda. Okay, 2 pi by lambda is the wavelength. Okay, so from quantum mechanics, okay, from quantum mechanics, so energy E is equal to hf. Okay, h is Planck constant and frequency. So the frequency is equal to energy by Planck constant. Okay, but angular frequency is equal to pi by, so value of E. Okay, so f is equal to here 2 pi, and f is equal to, and this one is f. Now substitute the value of f. So here f is equal to E by h, so that is E by h. Okay, E by h. So which is equal to pi E divided by h. Okay, now differentiating, okay, now differentiating d omega is equal to pi by h is a constant. Okay, 2 pi is constant and h is the Planck constant, is also constant value, and dE, okay, is equal to dE. So since propagation constant, that means the wave number is also called as propagation constant. Okay, the propagation constant or wave number also called. So k is equal to pi by lambda. Yes or no? Also called wave number. And for matter waves, okay, so matter waves lambda equal to 2 pi. Okay, sorry, lambda equal for matter wave, lambda equal h by p. Okay, h is equal to Planck constant, p is equal to momentum of the particle, where p is equal to, momentum of particle. Okay, p is the momentum of the particle. Now, so a equation equal to, so the k equal to, k is equal to 2 pi by lambda. Okay, but lambda equal to how much? So 2 pi by lambda equal to, so from matter wave lambda is equal to h by p. So that means 2 pi p by h. So that is k equal to 2 pi p by h. Now differentiating, okay, so dk is equal to 2 pi by h is constant. Okay, 2 pi by h constant, so dp. Okay, 2 pi by h is constant, now equal to dp. Okay, now so we know group velocity equal to d omega by dk. Yes or no? Group velocity is equal to Vg equal d omega by dp. So d omega equal to how much? D omega is 2 pi by h into dE. Okay, divided by k, value of k is 2 pi by h. Okay, dp. So this one is cancelled. Okay, so that means group velocity is equal to dE by
dp. Okay, so this was the group velocity, but we know the group velocity equal to d omega by dk. Okay, d omega dk. So here multiply h cross omega, h cross omega also multiply d of h cross k. Okay, so which is equal h cross omega is nothing but e, h cross p, k is nothing but p. Okay, so I am using, so Vg is equal to d omega by dk is equal to de by dp. Okay, what I am using this, so using h cross omega is equal to e, energy, h cross k is equal to momentum. Okay, using quantum mechanics notation, so h cross omega is equal to e, h cross k is equal to p. Okay, so ना रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आम पढ़ा कि आम जाचु कौन ग्रुप वेलोसिटी फर्मुला हो कौन Vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डीके, ये फर्मुला आम जाचु. ओके, किंतु ओमेगाटा कौन हो आंगुलर फ्रिक्वेंसी हो के 2πf, आउ के इज वेव नंबर और ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपागेशन कांस्टेंट मध्य कहती, तेणु ये 2π बाय लैम्बडा. ओके, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी आम जाचु E इज इक्वल टू एस न्यू. ओके, E इज इक्वल टू एस न्यू और एच एफ. न्यू और एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी, ताल फ्रिक्वेंसी केते होबा ना एनर्जी बाय प्लैंक कांस्टेंट है, किंतु आम ओमेगा केते ना आंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू केते 2π. ये जो आम लिखिलु ये ओमेगा इज इक्वल टू आंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल केते 2πf, ताल मु 2π लिखिली, एफ रो वैल्यू केते e बाय h पुट कली केते हला 2π e बाय h. एबे आको आम डिफरेंशिएटिंग करबा हेले, ताल d ओमेगा इक्वल टू 2π बाय h होची कांस्टेंट, d हे गला, किंतु प्रोपागेशन कांस्टेंट आम वेव नंबर कहूँ, ताल के इज इक्वल केते 2π बाय लैम्बडा, याकू आम सेमती है फर किंतु मैटर वेव पाई कौन हो ना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. सो लैम्बडा इज इक्वल टू केते हो h बाय p, लैम्बडा वेव लेंथ, h हो प्लैंक कांस्टेंट, p हो मोमेंटम. ओके, p मोमेंटम, तेणु p इज इक्वल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ओके, नेक्स्ट तेणु k इज इक्वल केते 2π बाय लैम्बडा, तार 2π लैम्बडार वैल्यू केते डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्बडा हो h बाय p है, तेणु यहाँ के 2π p बाय h हो गला, तेणु k इज इक्वल 2π p बाय h हो गला. ओके, एबे याको हम डिफरेंशिएटिंग करबा, dk इज इक्वल 2π बाय h हो कांस्टेंट है, एबे dp हो गला, किंतु आम जानछु ग्रुप वेलोसिटी इक्वल केते d ओमेगा बाय dk, तेणु d ओमेगा र वैल्यू केते 2π h बाय d है, आउ dk र वैल्यू एट लिखि 2π बाय h बाय dp, तेणु 2π h 2π बाय h आ 2π बाय h कटि गला ये, तेणु Vg इज इक्वल केते ग्रुप वेलोसिटी d बाय dp हो. किंतु आम ग्रुप वेलोसिटी को एमती भी लिखिपारे, मुझे कौन कली एच क्रॉस बोथ साइड मल्टीप्लाई करदेली है, किंतु आम एच क्रॉस ओमेगाटार वैल्यू के ई क्वांटम मेकानिक्स आम यूज करूँ, एच क्रॉस के इज इक्वल टू पी, तेणु मोर एच क्रॉस ओमेगा को मुझे ई नेली, एच क्रॉस के को पी नहीं गली, तेणु Vg इज इक्वल डी ओमेगा बाय डी के इज इक्वल डी ई बाय डी पी. ओके.